हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम ट्यूटोरियल। इस वीडियो से हम इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटीन सॉर्टिंग के वी विल कंबाइन दिस टॉपिक्स, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटीन सॉर्टिंग. This we are starting from this video, right? We will start with the one by one organelles. First we will discuss organization and then we will go to protein sorting. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new video is out. This is absolutely free from your side, but this will help us grow. So in this video of this first topic is nucleus. Okay, what we will do? There will be two parts of the video. This is the part 1 and you will get part 2 as well. So in the part 1 we will see organization, all about nucleus. How is the organization in the cell, right? In terms of nucleus, structure, function, all we will see in this first video. Okay, nucleus का organization कैसे है cell में, structure, function with detail. And जो part 2 होगा, that will all about protein transport. Basically protein sorting we will see, right? Nucleus में protein import export कैसे करते हैं. Okay, all about transport, that will be in the part 2. So let's start with the organization now with the help of pictures, right? Pictures से हमें बहुत easy होता है समझने में. So this is the nucleus. We know this is the nucleus. nuclear pore है, एक basic diagram है यहाँ पे. This is nuclear envelope, right? Then nucleolus, nucleoplasm में chromatin is suspended, right? So this is the basic structure. अभी हम डिटेल में देखेंगे थोड़े. See, this is a little bit detail. जो nuclear envelope है, you can see here, consists of inner nuclear membrane and outer nuclear membrane. ये 2 layers होते हैं, right? Like this we draw. Okay, so this is outer membrane and this is inner. Outer membrane and inner membrane consist of nuclear envelope, right? Then you can see here nuclear pores, brown color structure, nuclear pore. So that we call nuclear pore complex, NPC. Right? That is chromatin suspended, as we saw in the previous diagram. Between the outer and inner membrane, outer membrane and inner membrane के बीच में जो ये white color का space है, you can see this. This is called basically perinuclear. Okay, perinuclear space. अभी जो nucleus है, we know that is continuous with the ER, right? ER. Suppose this is the nucleus. Okay, let's see, this is a nucleus and then here ER is attached like this. This is the ER, this is the nucleus. Nucleus का जो outer membrane है, that is continuous with the ER. You can see here, this is ER.
lumen, right? And lumen is continuous with the perinuclear space. See this, okay? जो lumen है की, that is connected with the nucleus by this perinuclear space, right? हमें ये भी पता है जो में टाइप है रफ एंड स्मूथ. इफ रफ है रफ में ribosomes are attached, right? You can see ribosomes are attached in the rough okay? So nuclear lamina है, you can see this blue color thing, so this one nuclear lamina है. Lamina basically is a protein network of lamins, right? Lamins that we will go in detail here. Links from lamina to cytoskeleton. तब जो lamina है that is connected to cytoskeleton as well. Okay, you can see this picture B. This is just a nuclear lamina को zoom किया, right? Nuclear lamina. You can see all this is a network of lamins, protein lamins. Right? And what are these lamins? Lamins are intermediate filament. Intermediate filaments. साइटोस्केलेटन उसमें जो इंटरमीडिएट फिलामेंट फैमिली है लामिन प्रोटीन्स, and that forms a network known as nuclear lamina. So ये नेटवर्क है पूरा, and ये जो ब्राउन कलर के है स्ट्रक्चर्स, this is what nuclear pore complex. Okay, nuclear pore complex. So we got this. So this is just a basic, right? I will write here. Nucleus consists of nuclear envelope. Nuclear envelope में outer nuclear membrane and inner nuclear membrane, right? Second, nuclear pore complex. Okay. Then third, nuclear lamina. This is basically network of lamins. Lamins protein में अगर म्यूटेशन है, the gene LMNA is one of the important gene. अगर इसमें म्यूटेशन है lamins में, then it gives rise to laminopathies. And one of them is this gene LMNA, which gives rise to progeria. Okay, progeria is a disease where the nuclear lamina is disturbed. Right? तो फिलामेंट जो नेटवर्क है अच्छे से फॉर्म नहीं होता, structural organization of the nucleus is disturbed. This results in a disease called as progeria. You must have seen this, the picture part. Right? This is a condition due to mutation in LMNH. Okay. Also, there is a rare type of disease
known as muscular dystrophy caused by this gene. Okay? Basically, all over term is the broad term. हम कह सकते हैं लैमिनोपैथीज. लैमिनोपैथीज में प्रोजेरिया एक एग्जांपल है, कॉमनेस्ट एंड द अदर, राइट. तो नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस में आरआरएनए सिंथेसिस, right? No, RNA synthesis takes place in the nucleolus. क्रोमैटिन बेसिकली क्या है? इज अ डीएनए, राइट. डीएनए thread like form. What we can say? Decondensed structure, right? Decondensed structure of DNA. Next component is a nucleoplasm. Nucleoplasm is just, इसमें सब सस्पेंडेड है, राइट. जो न्यूक्लियस में कंपोनेंट्स है, components of nucleus are suspended in nucleoplasm. जैसे सेल में साइटोप्लाज्म है, वैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है. ओके, जो कंपोनेंट्स है न्यूक्लियस में सस्पेंडेड है, राइट. फ्लूइड लाइक यू कैन से. तो बेसिकली न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है हमें पता है. दिस इज अ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट. जेनेटिक इंफॉर्मेशन और वी कैन से हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का स्टोरेज न्यूक्लियस में होता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेप्लिकेशन है डीएनए का न्यूक्लियस में होता है. देन transcription also takes place in the nucleus. We have discussed these things, right, in molecular biology. You will find that in the playlist. So replication, transcription takes place in the nucleus. Transcription के बाद जो RNA formation होता है, and that RNA comes out the nucleus for the protein synthesis, right. जो protein synthesis है सेल में होती है. Okay, this is the function of nucleus. Nuclear pore complex. This is very broad to study and very important, right. जैसे न्यूक्लियर लैमिना हमने देखा, प्रोटीन है लैमिन्स, उनका नेटवर्क है, वैसे ही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज हम ड्रॉ करते वक्त जस्ट ऐसे पोर्स ड्रॉ करते हैं, बट दिस आर नॉट दैट इजी एक्चुअली. एक पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर में, तो इट इज अ गेट बेसिकली, राइट. न्यूक्लियर पोर है दैट इज गेट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ओके, जो ट्रांसपोर्ट का पार्ट है पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे ऑफ द वीडियो, राइट. बट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर is very important before we study the transport, right. I will write here just NPC, nuclear pore complex. Basically this is formed by the 30 different proteins. Okay, 30 different proteins called as nucleoporins. Okay, न्यूक्लियोपोरिन्स ये प्रोटीन है जो ये न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन करते हैं बाय अ अरेंजमेंट, राइट. So these are 30 different types of protein.
अभी ये जो प्रोटीन है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, हाउ these are formed, right? उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? बाय एक्सटेंसिव जीन ड्यूप्लीकेशन, राइट? जीन ड्यूप्लीकेशन, इसी के वजह से अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोपोरीन्स फॉर्मेशन हुआ है. नेक्स्ट, there are two important terms you have to know: eightfold symmetry, eightfold rotational symmetry, and twofold transverse symmetry. ट्रांसवर्स सिमेट्री, ओके. जो एट फोल्ड है उसे हम ऑक्टागोनल भी कह सकते हैं, राइट? टू फोल्ड है उसको बायलैटरल, ओके. So this is a structure, basically arrangement, eightfold rotational symmetry and twofold transverse symmetry. Now let's see picture. पिक्चर से हम इजीली देखेंगे एग्जैक्टली क्या क्या है इसमें. दिस इज अ एग्जैक्ट पोर कॉम्प्लेक्स. साइटोसोलिक फाइब्रिल्स यहाँ पे है, राइट? साइटोसोलिक फाइब्रिल्स, you can see they are 4 in number. See, they are 8 in number. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. You can see these are 8 in number. यहाँ पे भी जो अरेंजमेंट है, see this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And you can see 8 subunits. Okay, 8 subunits है, इसलिए हमने वहाँ पे लिखा 8-fold symmetry, right? You can remember like this. Then साइड से जब हम देखते हैं तो we can see this one and this one, two structures हैं. Okay, एक ऑरेंज से है और एक ब्राउन से. So this is a two things, right? So this is a two-fold symmetry. We can relate like this. हम ऐसे remember कर सकते हैं. Okay. So now you can see ये पूरा जो structure है, this is formed by nuclear porins, right? You can see here membrane ring proteins, then scaffold nucleoporine, सेंटर में जो है चैनल न्यूक्लियोपोरिन. ओके, चैनल में अगेन देयर आर डिसऑर्डर्ड रीजन ऑफ चैनल न्यूक्लियोपोरिन जो सेंटर में है, राइट? दिस इज बेसिकली, इसमें इम्पोर्टेंट ये है, इसमें FG रिपीट्स होते हैं, FG रिपीट्स, राइट? और वी कैन से FG रिच रीजन्स. FG is what basically, F stands for phenylalanine, F stands for phenylalanine and G stands for glycine. These two are the important amino acids giving the structures hydrophobic character. मतलब यहाँ पे सेंट्रल में हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बिल्डअप होता है बिकॉज ऑफ दिस रिपीट्स. ओके, इसके वजह से लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू दिस पोर, राइट? लार्ज मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स. ओके, so this is present in the channel nucleoporins. These are disordered regions, or we can say unstructured regions, right?
अनस्ट्रक्चर्ड रीजन। अभी साइटोसोलिक साइड पर हमें साइटोसोलिक फाइब्रिल्स दिख रहे हैं, दिस आर जस्ट स्ट्रेट, बट जो न्यूक्लियस साइड है वहाँ पे ये फाइब्रिल्स कन्वर्ज हुए हैं। कैन सी दिस structures where the nuclear fibrils are getting converged, right? तो न्यूक्लियस के साइड पर एक कन्वर्ज करते हैं which gives a nuclear basket, मतलब basket like appearance देते हैं, that is called nuclear basket, right? It forms a basket like structure, thus it is called nuclear basket. Okay, I am erasing this because to get you clear picture. You can see this is a nuclear envelope, inner membrane, outer membrane, right? Inner membrane यहाँ पे न्यूक्लियर लैमिना अटैच है। ये जो न्यूक्लियस का स्कैफोल्ड है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वी कैन से इज मेंटेन्ड बाय लैमिना, प्रोटीन लैमिन। ओके, देयर आर डिफरेंट पिक्चर्स, you can make a screenshot and this is very important. See, in this picture you can see clear picture of the nuclear pore complex. पूरा जो स्ट्रक्चर है, right, basket like you can see, a basketball like this you can see. नीचे हेट्रोक्रोमैटिन, देन लैमिना, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ओके, पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दिस न्यूक्लियस इज कनेक्टेड विद रफ ईआर, बाय रफ बिकॉज यहाँ पे राइबोसोम अटैच है, राइट। नाउ इस पिक्चर में स्पेशल क्या है, दिस अगेन दिस प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो आउटर मेम्ब्रेन है, यू कैन सी दिस आउटर मेम्ब्रेन of nucleus, this is connected to intermediate filament and actin filament in the cytoplasm. Okay, intermediate filament and actin filament से connected है। So here you can see integral protein, right? Integral protein है यहाँ पे, और एक प्रोटीन है नेस्प्रीन, right? You can see here as well as here नेस्प्रीन. So this protein is very important, which will make a connection between integral protein and actin filaments. मतलब न्यूक्लियस जो आउटर मेम्ब्रेन है that is connected to cytoplasm, actin filaments and intermediate filaments through this protein known as ne스प्रीन. Ne스प्रीन में भी there are types 1, 2 and 3. 1 and 2 is responsible for actin filaments and 3 is responsible for intermediate filaments. And this you have to remember, small things very important from the picture to be noted. One more you can see picture, यहाँ पे cytoplasm, यहाँ पे nucleoplasm. See, you can see nuclear basket, nuclear ring, right? The central channel, inner nuclear membrane, nuclear envelope, right? Transmembrane ring, okay, and outer nuclear membrane, cytoplasmic ring, and cytoplasmic filament. Here Fg repeat domains of Fg nucleopore, central scaffold. All this structure consists of nuclear pore complex, very important. And PCs are very important for the transport of molecules in and out of the nucleus, right? और एक पिक्चर है यहाँ पे, सी साइटोसोलिक फिलामेंट्स, सेम Fg न्यूक्लियोपोरिन, स्ट्रक्चरल न्यूक्लियोपोरिन्स, वाई कॉम्प्लेक्स। इस पिक्चर में ये स्पेशलिटी है, वाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है स्ट्रक्चरल न्यूक्लियोपोरिन्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये वाई कॉम्प्लेक्स। दिस इज सेम nuclear envelope है, consists of outer nuclear membrane, inner nuclear membrane,
membrane nucleoporine, nuclear lamina, and nuclear basket terminal ring. Inside there is a nuclear plasm. You can see this is a Y complex form. जो सेंट्रल में हमें पोर दिखता है, that basically consists of FG repeats, right? And ये जो फिलामेंट है सी FG nucleoporine. There are regions where FG is concentrated. जैसे यहाँ पे FG है, यहाँ पे FG है, right? अदरवाइज जो पूरा स्ट्रक्चर है हाइड्रोफिलिक है, but presence of these FG repeats gives hydrophobic character. Hydrophobic character की वजह से large molecules cannot enter. Okay, then who can enter basically? मतलब enter, we are talking this in terms of diffusion. Okay, in terms of diffusion, passive diffusion. So passive diffusion of small molecules that is less than, or we can say approximately 40 kilodalton size occurs through passive diffusion, right? And large molecules का जो transport है वो भी हो सकता है by the active transport, okay, with the help of different proteins that we'll be discussing in the transport. Now let's summarize about nucleoporins, okay, because you have to note this. तो nucleoporins है उसमें क्लासिफिकेशन है as we saw in the picture, right? जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पे scaffold nucleoporins दिए है, channel nucleoporins दिए है, and membrane ring proteins दिए है. In this picture again यहाँ पे FG repeat domains of FG nucleoporins दिए है, transmembrane ring, central scaffold. Okay, you can see different things have been given. इस पिक्चर में भी FG nucleoporins दिए है, structural nucleoporins and membrane nucleoporins ऐसे दिए है. So now we will summarize basically because properly हम classify करेंगे nucleoporins को. So basically there are three types: membrane nucleoporins, okay, then structural and channel. Okay. जो membrane से connected है that is membrane. Okay, as I said, जो membrane से connected है those are membrane nucleoporins. This can also be called as transmembrane because membrane spanning है, okay, nuclear envelope को span करते हैं from outer to inner membrane. So thus it can be said transmembrane nucleoporins as well. Structural जो है इसे scaffold भी कह सकते हैं बिकॉज एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट या रिजिडिटी के टफनेस प्रोवाइड करना काम होगा स्ट्रक्चरल न्यूक्लियोपोरिन्स, राइट. एंड जो चैनल न्यूक्लियोपोरिन्स है वो एक चैनल फॉर्म करते हैं, गेट फॉर्म करते हैं थ्रू विच मॉलिक्यूल्स कैन कम इन एंड आउट, ओके, ट्रांसपोर्ट होगा. तो चैनल न्यूक्लियोपोरिन्स में भी डिसऑर्डर्ड रीजन्स है, डिसऑर्डर्ड रीजन, राइट. डिसऑर्डर्ड और वी कैन से अनस्ट्रक्चर्ड, जो एक रैंडम अरेंजमेंट है एंड दैट रीजन्स कंसिस्ट ऑफ FG रिपीट्स, राइट. ये इंपॉर्टेंट है. दस चैनल प्रोटीन्स को ही जो चैनल न्यूक्लियोपोरिन्स है उसे ही FG न्यूक्लियोपोरिन्स बोलते हैं. तो इन पिक्चर आई शो यहाँ पे FG न्यूक्लियोपोरिन्स है,
as well as यहाँ पे FG nucleoporins. But basically these are channel nucleoporins which are forming channel of transport. And channel nucleoporins में regions है where FG repeats are concentrated. A more number of FG repeats we can see. This gives hydrophobic character as I said previously. हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर की वजह से रेस्ट्रिक्ट पैसिव डिफ्यूजन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, राइट, लार्ज मॉलिक्यूल का पैसिव डिफ्यूजन नहीं होगा बिकॉज इट गिव्स हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर मीन्स जेल लाइक स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट. जेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है इन द सेंट्रल, राइट, सेंट्रल चैनल. Here, central channel. Got it? So one last thing is that nuclear pore complex resembles a donut. Okay, donut like structure, right? How donut? You can see in donut there is a central pore like this. ऐसे structure में देखते हैं. Okay, also you can say basket. हमने देखा basket का arrangement कैसे है, right, like this. So this was all about the organization of nucleus, right? That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.